Okay, hello and hi everyone. Welcome back to my session. Here, what we do, I take in half our session, a very small session on several topics related to your subject, the educational topic, and we promote education here, right? So, this is an extension, this is a virtual venture, which is an extension of my NGO, as you know. Now, moving ahead, today we are discussing ICSE Civics Class 9, and this is presented by me, Simran Priya. Now, let's move forward. This is chapter 1 of civics that we are discussing, and this particular session is part B of our constitution. Okay, is it very clear to all of you? Now, thank you so much. Hi and welcome to Brahma Shankar Upadhyay. Thank you so much, sir, for joining in. Now, what we will do, we will discuss our constitution. अगर अभी अभी आपने part A का नहीं देखा है, go watch part A first, क्योंकि इससे you will have a better understanding and a clearer concept of our constitution of India, right? So now let's dig in and let's know what are the table of contents that we will be discussing this session. Now thank you so much. Hi Shishu Yadav. Hi Janvi Singh. Thank you so much for joining in, बच्चा. Moving ahead, पहला जो discussion है हमारा वो है Dr. B.R. Ambedkar's contribution to the Indian Constitution. What was the role of Dr. B.R. Ambedkar in the formation of Indian Constitution? सेकेंड हम लोग करेंगे कितनी रीडिंग्स की गई, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया गया, हाउ मच रीडिंग्स वर डन. मूविंग ऑन वी विल डिस्कस द टाइम टेकन, कितनी टाइम ली गई थी इस कॉन्स्टिट्यूशन को, इस संविधान को पूरा लिखने में, हाउ मच टाइम वाज टेकन. मूविंग अहेड वी विल डू द implementation of constitution, how it is implemented, and the significance of January 26th. What is the significance of January 26th as we celebrate January 26th as Republic Day? So why January 26th was taken as? I would like to say hello to Gudu Mishra and thank you so much Shishu Yadav. Thank you so much for joining in. Now before starting my session, you must know your educator, right? So here am I. My name is Simran Priya. I have done my graduation and my masters from Delhi University. This is a subject of my expertise, right? I have been teaching from the last 4 years and currently I am an educator at a school, in an ICSE school, that is Carmel School. Okay, moving ahead, the very first topic of discussion. Let's dig in and let's start with our session. Now, आप लोग क्या करोगे? आप लोग जल्द से जल्द अपने अपने क्लासमेट्स को, अपने फ्रेंड्स को, सबको बुला कर लेकर आओ, so that they could ask questions in my live session and they could have an experience of this and they could understand this chapter better. बच्चा, constitution, these are not an easy chapter. अगर आप अपने से पढ़ोगे, there will be several words that you will not understand. Okay, now I am here to make you understand this. So first thing जो आज हम लोग को let me see how many people are joining in. Am I audible and visible to everyone? Can you please tell me, am I audible and visible to everyone? Okay. Okay, now let's move forward. Yes. Uh, Okay, okay, Gudu Mishra. Thank you so much for your question. I would like to I would like to welcome Raj Kishore Kumar and thank you so much for your question. I will be answering your question very soon. Okay, पहले हम लोग शुरू करते हैं, फिर हम लोग answer करेंगे. Welcome Adiba Azaz. Thank you so much, Bacha, for joining in. Now, first thing. B.R. Ambedkar was popularly known as Baba Sahib and he is also known as father of Indian Constitution. Do you know this? Who is the father of Indian Constitution? Dr. B.
आर अम्बेडकर, उनको फादर बोला जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, and he is popularly known as Baba Sahib, okay, was one of the architect of the Constitution of India. So Constitution of India को बनाने में एक जो अहम भूमिका निभाते हैं, that is Dr. B.R. Ambedkar. So he was an architect of the building of the Constitution, of the drafting of the Constitution, right? Now, what kind of personality he was, what he was actually in his professional life? He was an jurist. He was a jurist, he was an economist, he was a politician and also a social reformer who raised his voice against untouchability, who raised his voice against the cruel practices of the minority section. So he was an eminent personality, right? With a degree, with a jurist degree, he was an economist, politician, and of course a social reformer. ठीक है, text of the constitution was prepared by Baba Sahib, provided for constitutional guarantee and protection. Now, let us understand what this is. जो ये text है constitution की, जो ये पूरा संविधान हमारा लिखा गया है. Now, you know India has the only written constitution. India के पास written constitution है, जिसको hand written किया गया था. It has a written constitution. और बहुत कम और 2-4 देशों के पास ही written constitution है. Do you know this? Now, what happened कि इस टेक्स्ट को जो प्रिपेयर किया गया था बाबा साहेब के द्वारा, उनको वो क्या प्रोवाइड करता है? वो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी देता है. हमारे पास जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारी सिटीजन को फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज दी जाती हैं, वो उसको हमारे पास जो फंडामेंटल राइट्स है, उसको गारंटी कौन करता है कि यस, दिस इज अ राइट फॉर यू, एंड इसके लिए आपको क्या करा जाता है? आपको गारंटी मिलता है, इसको आपसे नहीं छीना जाएगा. एंड हु इज प्रोटेक्टिंग आवर राइट्स? हमारे राइट्स को, हमारे अधिकार को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन. यस, ये हमें प्रोटेक्ट कर रहा है. Okay, thank you. Now, for a wide range of civil liberties for the Indian individual citizen, including, now here we have a wide range of, here we have wide range of here we have a wide range of civil liberties for individual citizen. यहाँ पर हमें बहुत सारे civil liberties मिलते हैं जो इंडिविजुअल सिटीजन्स को क्या क्या देते हैं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन. क्या होता है बच्चा फ्रीडम ऑफ रिलीजन? दैट अ पर्सन कैन प्रैक्टिस देयर ओन रिलीजन. नॉट ओनली दे कैन प्रैक्टिस देयर ओन रिलीजन, बट they are free to promote their own religion and also to spread their own religion. Okay, इस चीज का फ्रीडम है, हमारे संविधान में हमें इसका फ्रीडम देता है. Understood? ठीक है. Now, second is abolition of untouchability. Now, the practice of untouchability that was happening in our country, जो ये untouchability की चीज थी, इसको कौन abolish करता है? इसको भी ये हमारा संविधान इसको एक I am really sorry. So, Okay, so Guddu Mishra has asked me a question and Annie has replied to it. Thank you so much. That's the beauty of a live session, that you are engaging among yourself. He has asked that, yeah, Dr. B.R. Ambedkar was from a group of untouchable group. So yes, he was from a lower class. So that's why he promoted this. Now, moving ahead, बच्चा पहले ये कर लेते हैं, then all your questions I will entertain in the last 5 minutes. You can shoot out all your questions upon me in the last 5 minutes. First, focus on कि हमें क्या इसमें अभी सीखना है. पहले सीखो, फिर सवाल उठाते हैं. Okay? Now, फिर इस टाइम पर हमें कुछ सिविल लिबर्टीज मिली, जैसा कि हमें अपने धर्म को प्रैक्टिस, प्रमोट और स्प्रेड करने की फ्रीडम मिला. हमारी समाज से अब अनटचेबिलिटी को हटाया गया. सोशल राइट्स दिए गए विमेन को,
औरतों को अधिकार दिया गया, औरतों को सोशल राइट्स दिए गए. Now a system of reservation. Now you all know कि we have in India a system of reservation जहां पर कुछ सीटें गवर्नमेंट सर्विसेज में किसी कुछ लोगों के लिए रिजर्व रहती है ना. रिजर्वेशन का जो चलन है ये भी हमें संविधान हमारे लिए लेकर आता है. Okay, now these jobs were reserved for whom? For the scheduled caste and scheduled tribe, the marginalized people, जो लोग marginalized थे, जो इतनी टाइम से अनदेखे किए जा रहे थे, अनटचेबल माना जा रहा था, उनको वंचित रखा गया था. किससे? पढ़ाई से, लिखाई से, सोशल प्रैक्टिसेस से. सो वो लोगों को रिजर्वेशन दिया गया जॉब में ताकि वो भी एक अच्छा जीवन जी पाए. ओके, now, to shape India into a complete sovereign democratic republic. Now, we all know India is a sovereign democratic republic. हम लोग ये जानते हैं India क्या है? एक sovereign democratic republic है. I have explained these words to you. Okay, if you haven't understood it, what you can do, you can go back to the session in which I have discussed the A part and you can look into it. Okay, in which liberty and dignity of the individual is ensured along with national integrity. Now, जब हम संविधान लिख रहे थे तो सिर्फ हम नेशन को दिमाग में नहीं रख रहे थे. It was not only the respect of the nation that was kept in mind, but B.R. Ambedkar kept in mind the needs and the things that an individual required. Okay, he kept in mind that about the liberty and the dignity of an individual. He was focusing on each and every individual. हर एक individual पे वो focus कर रहे थे. So ये जो इंडिया पूरे तरीके से sovereign, democratic और republic बनता है, इसमें he had what? He had liberty and dignity of an individual is ensured along with national integrity. Okay, thank you so much, Mehu Mishra. Welcome back to our class. Moving ahead, Baba Sahib incorporated the following principles in the Constitution of India. Baba Sahib ने बहुत सारे principles को incorporate किया Constitution of India में. We are going to discuss 5 major principles. हम लोग 5 major principles discuss करेंगे जो कि Constitution of India में incorporate किया गया. So if people ask you what are the principles of the Constitution, किस आधार पे Constitution को बनाया गया है, what they are aiming for, okay? So you can go ahead and write this. First is make the Indian Constitution workable, flexible and strong enough. Now, I had one person who has asked me when the Constitution was done till 26th November, why the amendment was done on 26th January. जब Constitution को 26 November तक बनाया गया तो 26 January में amendment क्यों लाना जरूरी था? इसका जवाब बच्चा आपको यहाँ मिलता है कि our constitution is very flexible. ये समय के साथ to keep up with the time, with the passing time, and if anything it requires, any amendment it requires, it is done in the constitution. क्योंकि ये बहुत flexible है. It is not a rigid constitution. हमारा संविधान बहुत rigid नहीं है, rather it is flexible. So, जब वो दिसंबर तक किया गया बच्चा और उसके बाद ऐसा महसूस हुआ कि no, they need to change certain clause, so उन्होंने amendment किया. Okay, now this made Indian Constitution workable, जिसको आप लागू कर सकते हो, जो flexible है and which is strong enough to hold countries together both in peace and in war. So our Constitution provides us the base, जिसमें जो हमें क्या दे रहा है, जो हमारे समाज को चला रहा है, जो हमारे समाज में होने वाले बदलाव के साथ खुद भी बदलता है और जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है ताकि वो पूरी कंट्री को एक साथ लेकर चल सके आगे, both in peace
and in war. Okay, now the second thing is it provides special safeguard to the minorities. Our constitution keeps in mind in protecting the minorities. Safeguarding means to protecting the minority. So it is very particular. What is one of the principle of our constitution? That it is very particular to the safeguarding or protecting of the minorities. Okay, and certain classes who are socially and educationally backward. No, now सिर्फ minorities कौन है बच्चा? Minorities कौन है? पहली बात हो सकता है जिनकी आबादी कम है, ओके, वो minorities हो सकते हैं, एंड वो लोग जिन्हें सामाजिक और एजुकेशनल तरीके से बैकवर्ड रखा गया. ओके, हम लोग जानते हैं कि हमारे समाज में पहले वर्णाश्रम था, है ना, वर्णाश्रम था जिसमें ब्राह्मण्स वर देयर वर क्षत्रियास, देयर वर वैश्यास एंड देन केम द शूद्रास. ठीक है, अब ये इन लोगों को क्या था, ये तीनों वेदास को पढ़ सकते थे एंड ब्राह्मण हैड द थिंग कि ये वेदास को पढ़ा भी सकते थे. ठीक है, और ये तीनों वेदास पढ़ सकते थे, सो दे वर एजुकेशनली क्वालिफाइड. लेकिन शूद्रास का फंक्शन था ओनली टू सर्व दीज पीपल. दे हैड नो सोशल वैल्यूज, दे हैड नो सोशल स्टैंडिंग एंड नो एजुकेशनल बैकग्राउंड. सो हमारा संविधान जब बना, उन्होंने इन ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट किया. ओके, now third is incorporated the right to constitutional remedies, that any individual, if I have this, that my right is violated, अगर मेरा कोई भी right violate किया जा रहा है, so what I have the right of constitutional remedy. I can file cases, I can go to Supreme Court, I can go to High Court, and even I can go to lower courts. अपने region के courts में भी आप जाकर आप बोल सकते हो कि संविधान में ये लिखा है, and look, my fundamental rights are being compromised. Okay, so our Samvidhan provides us what? Right to constitutional remedies. Okay, to ensure that the fundamental rights of an individual are not infringed by the center or the state government. कि हमारा जो right है उसको state और ना ही सेंटर कहीं से भी एक्सप्लॉइट करे या इन्फ्रिंज करने की कोशिश करे. ओके, सो हमारे पास क्या है, सुप्रीम कोर्ट, वो गवर्नमेंट से भी ऊपर है बच्चा, कि अगर गवर्नमेंट ही हमें एक्सप्लॉइट कर रही है, सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट, वी कैन गो टू द हाई कोर्ट्स एंड द लोअर कोर्ट्स. Okay, now the fourth part is single citizenship. We have what? हमारे पास क्या है, citizenship है, single citizenship है. That means we are the citizen of the nation, not of the state. हम जैसे कि अगर हम बिहार में, असम में, छत्तीसगढ़ में, केरला में रह रहे हैं, so हम लोग उस स्टेट का सिटीजन नहीं है, बल्कि we are the citizen of the nation. So that is the nation के citizen है, that is single citizenship. Okay, now we have single judiciary. हमारे पास single judiciary body है जो हमें क्या करती है, जो हमारे rights को safeguard करती है, जो हमारे राइट्स को सेफगार्ड करती है, और हमें क्या करती है, अगर कोई भी तरीके का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है तो हमें कौन सेफगार्ड करेगा, हमारी जुडिशरी, दैट आर द कोर्ट्स हमें सेफगार्ड करेंगे, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या लोअर कोर्ट्स हो. एंड यूनिफॉर्मिटी इन द फंडामेंटल लॉज टू इंटीग्रेट इंडियन सोसाइटी. एंड व्हाट वी सी कि सभी के लिए पूरे इंडियंस के लिए जो फंडामेंटल लॉज हैं वो यूनिफॉर्म है. ये नहीं कि कुछ के लिए कुछ लॉज है, कुछ के लिए कुछ लॉज है, ऐसा नहीं है बच्चा. सो व्हाट वी हैव यूनिफॉर्मिटी इन द फंडामेंटल लॉज. Okay, to integrate Indian society. Therefore, he proposed a strong center
इसीलिए उन्होंने क्या बनाया, बीच जो हमारा जो सेंटर गवर्नमेंट है उसको काफी स्ट्रॉन्ग बनाया टू मेंटेन टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिप्लिन, ताकि जो सेंटर में है, हो सकता है एक स्टेट दूसरे स्टेट से लड़ रहा हो, लेकिन सेंटर क्या कर सकती है, उनको काबू कर सकती है कि नो यू मस्ट नॉट फाइट, और हियर इज द डील, समझ रहे हैं आप, वो उसको सेफ गार्ड कर सकती है। इसीलिए दे मेड अ स्ट्रॉन्ग सेंटर बिकॉज वी हैव सिंगल सिटीजनशिप, क्योंकि हम लोग नेशन के पार्ट हैं, हमारे पास सिंगल जुडिशरी बॉडी है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट हमारे नेशन का है, वी हैव यूनिफॉर्मिटी पूरे देश में, इसीलिए हमारे सेंटर में एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बैठती है। Okay, moving ahead, the fifth point is incorporated directive principles to ensure social, economic, democracy and the welfare of the people of India. ताकि वो क्या किया, इसने इंकॉर्पोरेट किया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को, ताकि हमें क्या मिल पाए, हमें सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी मिल पाए, है ना। We have social democracy to elect our own representatives. We have economic independence and the welfare of the people was always kept in mind. Okay, now moving ahead the readings. Now you will learn that there was three stages of readings. Three stages of reading की गई before the passing of the constitution को पास करने से पहले 3 स्टेज में रीडिंग्स की गई। Okay, first the draft was discussed. Now एक रफ ड्राफ्ट बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट वाज डिस्कस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कौन डिस्कस कर रहा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा डिस्कस किया गया, क्लॉज बाय क्लॉज टू ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द ड्राफ्ट वाज डिस्कस्ड, सिंस कब किया गया, नवंबर 4 1948 में। ओके so ये किया गया। Now thereafter the draft underwent the second reading. समझो, पहला रीडिंग हुआ, कब हुआ, नवंबर 4 1948 में। दूसरी रीडिंग कब हुई, 49 में, अक्टूबर 1749 में, ठीक है। और तीसरी रीडिंग कब हुई, इट वाज द थर्ड एंड द फाइनल रीडिंग, जो नवंबर 26 1949 में किया गया। ओके तो ये 3 स्टेजेस में रीडिंग करी गई। नो प्रॉब्लम गुड्डू मिश्रा, नो प्रॉब्लम, नॉट एट ऑल, प्लीज डोंट बी सॉरी अबाउट दिस, यू कैन ऑलवेज गो अहेड एंड आस्क क्वेश्चंस। ओके, now how much time was taken to frame the constitution, कितना टाइम लिया गया इस संविधान को बनाने के लिए। Now we can say it took nearly 3 years. Why we say nearly 3 years? लेकिन आपको अगर एग्जैक्ट जानना है कि कितना दिन लिया गया, so it was 2 years. बच्चा remember, it was 2 years, 11 months and 17 days. So almost 17 days, 13 दिन कम है 3 साल होने में, ठीक है। So कितना टाइम लिया गया, it was 2 साल 11 महीना और 17 दिन में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन was finally passed. Okay, it was finally passed now by the Constituent Assembly. Okay, at the time of its signing, और जब इसको साइन किया गया, so इसके साइनिंग के टाइम में the Constitution consisted of 395 articles and 8 schedules. आप लोगों को this is very important for you to remember कि जब कॉन्स्टिट्यूशन साइन किया गया था, इसमें हमारे पास कितना था, 395 आर्टिकल्स थे लिखे हुए और 8 शेड्यूल्स थे जो इसमें लिखे गए थे। ओके, moving ahead, the implementation of the constitution. Now how was this constitution implemented on people, or when was it implemented on people? Okay, now after the signing of the constitution, अगर हम देखें कि signing of the constitution के बाद only the clause relating to citizenship and some others came into force immediately. समझो बच्चा, you do not have to learn, ऐसा रटने की कोशिश मत करना, समझो स्टोरी की तरह। ओके, जब कॉन्स्टिट्यूशन में साइन किया गया, आप लोगों ने पढ़ा था
See, हमें क्या किया गया? No, you do not have to learn the preamble, Vacha. You do not have to, of course, you do not have to learn the preamble, but you need to remember कि हमारे preamble में क्या लिखा गया है. Equality, fraternity, ये सब के ideas क्या हैं? Liberty, ये सब का ideas क्या हैं? Secular का मतलब क्या है? तो preamble को I will discuss the preamble also in detail आप लोगों के साथ, जिसमें मैं एक एक word का कितना खूबसूरत मतलब है वो मैं आपको बताऊंगी. ओके. ना आफ्टर साइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन में लास्ट में सब लोगों ने साइन कर दिया था, कितने मेंबर्स बचे थे लास्ट में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? 299 मेंबर्स. और कितने लोगों ने साइन किया था? 284 मेंबर्स ने साइन किया था. राइट. सो 284 मेंबर्स ने जब कॉन्स्टिट्यूशन को पास कर दिया और साइन कर दिया, ओनली क्लॉज, सो वही क्लॉज जिसमें सिटीजनशिप के बारे में कहा गया है, एंड सम अदर्स वाज फोर्स केम टू फोर्स इमीडिएटली, उसे तुरंत लागू कर दिया गया. जो सिटीजनशिप के बारे में कहा गया था उसे क्या किया गया? तुरंत लागू कर दिया गया. ओके. नाउ दिस वाज टू इनेबल पीपल डिस्प्लेस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ पार्टीशन. क्यों सिटीजनशिप के, अंडरस्टैंड दिस, सिटीजनशिप के क्लॉज को तुरंत लागू क्यों कर दिया गया? क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान एक थे, लेकिन जब ये लोग अलग अलग हो गए, इंडिया और पाकिस्तान बन गया, तो जो लोग डिस्प्लेस हो गए हैं, कुछ लोग पाकिस्तान छोड़ के इंडिया आ रहे हैं, कुछ लोग इंडिया छोड़ के पाकिस्तान जा रहे हैं, सो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लोग भागा दौड़ी कर रहे हैं. सो उसके वजह से उन लोगों को जो डिस्प्लेस हो रहे हैं, जिनको वहां पाकिस्तान से निकाल दिया गया या जिसको इंडिया से निकाल दिया गया, उस डिस्प्लेस्ड लोगों को इंडियन सिटीजनशिप का टैग देने के लिए व्हाट दे डिड, उन्होंने सिटीजनशिप के क्लॉज को तुरंत इन्फोर्स कर दिया. ओके. टू रजिस्टर देम एज इंडियन सिटीजन. इट इज वेरी क्लियर. आप लोग समझ गए कि क्यों सबसे पहले सिटीजनशिप, सबसे पहले क्या चीज लागू हुई थी? पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लागू हुआ था बच्चा, लोगों पे फोर्स नहीं किया गया था. सबसे पहले द सिटीजनशिप clause was lagu. Okay, now the constitution was adopted and passed by the Constituent Assembly on November 26. कब ये पास हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरीके से अपनाया गया और कब ये पूरी तरीके से पास हुआ? ऑन नवंबर 26, 1949. Okay, the constitution as a whole came into force with effect on January 26, 1950. समझो, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करना कि यस दिस इज माय संविधान, मैंने अडॉप्ट कर लिया, सबने बैठ के साइन कर लिया, ये कब हुआ था? नवंबर 26 में. लेकिन लोगों पर कब ये फोर्स किया गया कि नहीं, अब आप लोगों को सबको हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया है वो मानना पड़ेगा? ये 2 महीने बाद, दैट इज जनवरी 26, 1950 में इन्फोर्स किया गया. Okay, now with the coming into force of the constitution, Raja Gopalacharya became the Governor General. राजा गोपालाचार्य क्या बन गए? यहाँ के गवर्नर जनरल बन गए और उन्होंने लॉर्ड माउंटबैटन को रिप्लेस किया. नाउ लॉर्ड माउंटबैटन वाज द लास्ट गवर्नर जनरल जो इंडिया में थे, उसको रिप्लेस करके सी राजा गोपालाचार्य बन जाते हैं. ओके. नाउ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है और उसमें कितने मेंबर्स हैं? 299 मेंबर्स हैं. इसने ये बिकेम द प्रोविंशियल पार्लियामेंट. ये एक परमानेंट नहीं, टेम्पररी पार्लियामेंट बन गया until a new general election was held in 1951 and 52. ठीक है. 1950 में बच्चा 26 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया और एक जनरल इलेक्शन हुआ पार्लियामेंट के लिए कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा. उसके लिए एक जनरल इलेक्शन हुआ 51-52 में. ठीक है. तब तक के लिए ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स जो हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरह बिहेव कर रहे थे. ओके. ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो क्या बन गए? वो इंडियन यूनियन के भी प्रेसिडेंट बन गए. After the constitution came into being, Dr. Rajendra Prasad became the constitution president of the nation also. Okay. Now, what is the importance? That is significance. Significance का मतलब importance of January 926.
जनवरी 26 का क्या इंपॉर्टेंस है? The date January 26 of 1950 was for the commencement of the constitution. इस दिन क्या हुआ? The constitution was forced upon the people, was came into force. Okay, it was enforced upon the people, was specially selected due to historical importance. Now ये जो डेट है 26 जनवरी का बच्चा, ये अचानक से ऐसे ही बस नहीं हो गया था कि 26 जनवरी को ऐसे ही उन लोगों ने सेलेक्ट कर लिया, बल्कि इस डेट का एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। इस वजह से 26 जनवरी को सेलेक्ट किया गया था कि इस दिन चलो लागू करेंगे। What is the historical importance of this date? At Lahore session of the Congress, जब कांग्रेस अपना लाहौर सेशन एड्रेस कर रही थी, जो दिसंबर 1929 में हुआ था, बहुत टाइम पहले, अभी तो आजादी मिली भी नहीं है। तो 1929 में जब लाहौर सेशन कांग्रेस एड्रेस कर रही थी, तो वहां पर एक रेजोल्यूशन पास किया गया था, जिसने क्या किया? जिसने डिक्लेयर किया पूर्ण स्वराज। क्या डिक्लेयर किया बच्चा? पूर्ण स्वराज जिसने डिक्लेयर किया, और कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कांग्रेस। तो इसे करते हैं, जो लाहौर सेशन दिसंबर 1929 में कांग्रेस ने हेल्ड किया था, उस पर्टिकुलर सेशन में अ रेजोल्यूशन वाज पास की, जो मेन ऑब्जेक्टिव है कांग्रेस का, वो क्या है? पूर्ण स्वराज को हासिल करना, दैट इज कंप्लीट इंडिपेंडेंस को हासिल करना। ओके, जनवरी 26 1930 was fixed as was fixed as the first Independence Day. इस दिन को क्या फिक्स किया गया कि ये पहला इंडिपेंडेंस डे है। जनवरी 26 1930 was fixed as कि ये पहला इंडिपेंडेंस डे है, which would be celebrated as so every year. So जनवरी 26 को हर साल इंडिपेंडेंस डे के तरह बनाया जाने लगा। कब तक? 1947 तक, क्योंकि आप जानते हो कि हमारा अभी हम लोग 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे नहीं मनाते बच्चा। ये कब तक बनाया गया? 1947 तक इसे इंडिपेंडेंस डे की तरह बनाया गया। मूविंग ऑन अचीविंग इंडिपेंडेंस, लेकिन जब इंडिया को इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 में मिला, सो दैट बिकेम आवर इंडिपेंडेंस डे। जब जिस दिन हमें आजादी मिली, वो हमारा इंडिपेंडेंस डे हो गया। लेकिन क्योंकि हमें 26 जनवरी को भी जिंदा रखना था, तो हमने क्या किया? इसको हमने रिपब्लिक डे बना दिया, दैट इज द कमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन दिस डे। Okay, very good. Now with this we have come to the end of my session. Thank you so much each one of you. This is a very short session in which you have completed the entire chapter of what? Of your first for the entire chapter of civics, that is our constitution. Thank you so much for being so nice and so nice and so kind. Guddu Mishra, I do not have an idea about this. Thank you so much for your question. I will surely bring the answer of this particular question, a specific answer. मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकती बच्चा, because I want to be verified. मेरा answer हमेशा verified होना चाहिए, सही होना चाहिए, to the point होना चाहिए as a historian. Okay, so I do not know this question. So thank you so much. Thank you so much everyone for joining in. Thank you so much for being so kind, patient and generous. So now your kind of people is needed for our country. So let's together guide each other and make a better world together, right? Thank you so much Matangi Maurya. Thank you Bacha for joining in. Now we will meet in our next session where I will be taking up chapter 2 of geography very soon. Okay, till then stay connected, stay happy, stay safe, and please follow all the protocols of the COVID situation that we have to, and please get vaccinated as soon as possible. Now signing off, me Simran Priya. We will meet once again with my another session. Thank you so much Hanvi, and thank you so much Guddu Mishra. You have some excellent insights and questions बच्चा. Moving ahead, मैं फिर से मिलती हूँ